Hello investors, welcome to Alphawealth Avenues. We believe in the mantra, invest wisely and live wealthy. We are on a mission to empower your investing journey by providing cutting edge research and timely guidance. Today we are presenting a very interesting hot sector. The name is transformers. We have taken positions in this sector earlier, and this sector has started with a bang couple of years back, and हमें ऐसे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है. So let's do a deep dive. So सबसे पहले we understand that the transmission sector of power in India, उसमें एक सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर्स. उसका एक कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं पावर सेक्टर का इंडिया में. So India's peak electricity demand grew from 164 gigawatts to 250 last year, and by 2032 it's likely to be 458 gigawatts. So that's a huge jump of almost 3x in a span of just over a decade. To meet this big surge in demand, India has to boost its power generation and transmission in a big way. मतलब पुराने जमाने में जो ग्रोथ थी उस हिसाब से काम करके नहीं चलेगा. That is why India is focusing on renewable energy generation to complement the traditional thermal power in order to meet the high growth in the power demand on a sustainable basis. क्योंकि अभी यहाँ पे हम अगले एक डिकेड के डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, बट उसके आगे भी सस्टेनेबल बेसिस पे सप्लाई चालू रखनी पड़ेगी, ग्रो करनी पड़ेगी. तो जायज है कि द ट्रांसमिशन लाइंस नीड रैपिड एक्सपेंशन एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबाउट 2 years बैक 4,56,000 किलोमीटर्स के पावर ट्रांसमिशन लाइंस इंडिया में थे, जो अगले 10 साल में 6,48,000 किलोमीटर्स होने वाले. बट प्रोपोर्शंस में आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जो 11 लाख MVA थी वो डबल से भी ज्यादा लगी. सो बेसिकली दिस इज अ डिकेड ऑफ अपस्केलिंग ऑफ इंडियाज पावर डिमांड, mainly because we are going from a developing country to a developed country. Let's look at it further. यहाँ पे exactly ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स फिट होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए आपके लिए एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाया है. सो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जब जनरेट होती है थ्रू आइदर सोलर और हाइब्रिड ऑफ सोलर एंड विंड, डीसी पावर गेट्स जनरेटेड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर. ट्रेडिशनल थर्मल पावर से एसी पावर आती है और रिन्यूएबल से डीसी. तो उसको जैसे ही पावर जनरेट होती है एक इन्वर्टर के थ्रू उसको एसी पावर कन्वर्ट करना पड़ता है. आफ्टर दैट कम्स द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज कॉल्ड द इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर. द जॉब ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज 2 things. वन इज एसी पावर को अभी और हार्मोनाइज करना है, और जो 415 वोल्ट्स के स्पीड के आसपास जो पावर है उसको केवी में लेके जाना है, 11 से 33 के रेंज. सो दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. जैसे ये कन्वर्जन होता है आपकी पावर मेन कंट्रोल रूम में जाके आगे एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जाती है, इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर. यहाँ पे अगेन देयर इज अ बिग पुश फ्रॉम 100 to 33 kV रेंज to 220 to 400 kV. The reason for this is when power is to be transmitted over long distances, high voltage leads to reduction in the power loss. So यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन हो जाता है आफ्टर दिस 2 levels of transformers, और उसके बाद अगेन वी हैव टू रिवर्स द प्रोसेस टू टेक इट टू द एंड यूजर. सो ये थर्ड आता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिससे वापस पावर 220-400 kV से 11 के रेंज में चली जाती है. फिर एक लोकल सबस्टेशन में जाती है ये पावर. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स आते हैं जो एंड यूजर तक लेके जाते हैं. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है वो अलग अलग टाइप, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं टिल वी एक्चुअली अचीव द पर्पस ऑफ एंड यूज. इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन अ सबस्टेशन एंड यूजुअली अ लो मार्जिन कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट. इसके लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी काफी सारे रहते हैं. बट आईडी ट्रांसफार्मर्स की अभी डिमांड बहुत स्ट्रांगली पिकअप हुई है लास्ट 2-3 साल में, जैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी पावर ट्रांसमिशन को हाइक अप किया है. इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट एज वी हैव सीन.
अभी देखते हैं कि इंडिया में कौन से टॉप ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है. सो वी हैव सॉर्टेड फॉर यू इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द अपकमिंग कैपेसिटी. यहाँ पे आप देखोगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स कौन से हैं. सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द लास्ट स्लाइड, यहाँ पे आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के वो देख रहे हो. डायरेक्टली यहाँ पे आप शिल्चर देखोगे जो इन्वर्टर ड्यूटी है, और जो टैरिल है जो एडिशनल कैपेसिटी लगा रहा है उसमें भी है. एंड यहाँ पे यू हैव सम विथ अ लोअर कैपेसिटी. अभी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस केस एंड कमर्शियल डिटेल्स लेट अस अंडरस्टैंड इन दोनों को, इन्वर्टर ड्यूटी एंड पावर. So ID transformers have a shorter working capital cycle, that is conversion to cash is faster and they have moderate margins. But due to the big upsurge in their demand in the last few years, the prices are inflated and the margins are also inflated as of now. The power transformer is the main segment between transformers जो बरसों से चले आ रहे हैं. They have relatively better margins and low competition. However, they have a longer production process and a longer cash conversion process. Hence, companies catering to this segment have been able to command a premium. CG Power is putting a huge capex in the power transformer segment. However, वो कैपेसिटी को लाइव होते होते और 3 साल लग जाएंगे. अभी देखते हैं कि लेटेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ कपल ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर कंपनीज ने क्या डिक्लेयर किए हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट व्हाट वी हैव सीन. तो सबसे पहले टैरिल की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया. Please note that we are invested in this company since the past, and hence the standard disclaimer, please do not treat this as investment advice. So TARIL में आप देखोगे the revenue from operations has jumped from around 1300 crores to 2000 crores FY25 over FY24, 56% की growth है. As its product ratio has skewed towards power transformers, इनकी percentage of the operating margin has shot up from 10 to 16%, जिससे 144% की growth है. The profit after tax has jumped by 360% and hence earning per share by a similar number. For a company which has 2000 crores of revenues, it has a very impressive order book of unexecuted orders of more than 5000 crores. And by next year, they plan to have a 8000 crore order. The current margins are sustainable, which will be a good achievement as they grow fast, and by next year they will be reaching a 80% capacity utilization. They have planned a big capex outlay of 550 crores over the next 1.5 years. इसमें backward integration भी शामिल है. The good news is no tariffs on transformers till now. हमने जो भी अप्रैल में मेलोड्रामा देखा है उसमें, and further the tariffs will not have any impact on the business. They have a limited share from exports of 15 to 17%, and considering the domestic demand and the good payment terms, the management plans to continue a similar ratio. Next, let us come to Shilchar Technologies. Their revenue from operations has also grown to 57%. Now they have a revenue of 623 crores. If you remember, this has specialized in ID transformers. The capacity expansion plans which were getting discussed over the last few months are yet to be announced, and that's why by next year when they are supposed to hit 750 crores, they'll be operating at 100% capacity. The demand is strong both in the domestic and export segments for them, because in exports they have a 43% revenue share, where the margins are very good compared to the domestic market. उनका bottom line जो है, whether it is operating margin or the PAT or the EPS, all have grown in a similar proportion to the top line, which is all around 60%. So fairly impressive set of results. अभी देखते हैं, अगर हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करना चाहे तो what is the picture? So goes without saying that TARIL has a huge capacity today also compared to Shilchar. They are doubling their capacity in the next 18 months. The revenue is 3 times of Shilchar and their margin is improving. Hence the market cap is also much more than Shilchar. TARIL का जो ambitious capex है, उसके 2 qualitative aspects है that we need to understand. एक तो backward integration plan किया गया है, जहाँ पे not only CRGO material, bush, but other components of the ecosystem
of a transformer they are planning to make in-house and hence be self-sufficient. सिल्चर के मैनेजमेंट का ओपिनियन है कि ये सब इजीली अवेलेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड हेंस दे डोंट नीड दिस. Further, TARIL is investing into a 22,000 MVA capacity expansion in extra high voltage segment, which is currently limited in India, but they expect that as the power transmission lines keep on getting extended over all those thousands of kilometers, this will have to be done to ensure less power loss. So, यहाँ पे उनका मानना है there is limited competition, which is true, and the margin should also be better. This expansion is scheduled for completion within the next 1 year, which is very good for the company. Shilchar का जैसे हमने देखा, they are focused on the one thing that matters for the renewable energy segment transmission, and they also are planning a expansion. TARIL, as we know, is much more aggressive in capex, expansion and the type of transformers compared to Shilchar, and they really believe that this is a decadal opportunity even from now. इसीलिए उनके हिसाब से there is a lot to do over the next decade. Shilchar's management has been conservative about the capex. However, the good news is they have over-delivered on their promises in the past. So we believe all in all, this sector has very good demand prospects over the next 2-3 years, which should drive a very robust revenue growth for both these companies with stable margin, as they both are focusing on the right product mix. So that's about it about this sector. Hope this is useful to you in your investing journey. Hope this adds value to your investing knowledge. We will continue to bring curated research content for you. Do not forget to subscribe to our YouTube channel.